get into the concept of TCO. So TCO is nothing but total cost of ownership. Total cost of ownership. So as the word suggests, total means over the lifetime. So a financial approach used to determine complete cost of acquiring, using, and also end of life cost across products, services, and the overall system in its entire life cycle. So you have to define the life cycle कि ये एसेट मैं 5 साल के लिए ले रहा हूँ, 10 साल के लिए ले रहा हूँ, 15 साल के लिए ले रहा हूँ, and then look at the acquisition cost. Acquisition costs are nothing but your upfront cost जो आप एकदम सामने से पे कर रहे हो, राइट? थिंग्स लाइक परचेज कॉस्ट, जो अपफ्रंट आप परचेज करने के लिए कॉस्ट पे कर रहे हैं और उसके लिए आप ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट अपफ्रंट है, वन टाइम, टैक्सेस हैं वन टाइम, सामने से पहले पे करोगे बिफोर इवन यूजिंग दैट एसेट, राइट? सो देर आर मेजरली थ्री कंपोनेंट्स, उसी में सारी चीजें आ जाती हैं. सम ऑफ द डेफिनेशंस में से डिफरेंट कॉस्ट, बट एसेंशियली वो सारी कॉस्ट इन तीन बकेट्स में आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन डेफिनेशंस जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इज अ सेपरेट कॉस्ट, बट इट इज एक्चुअली ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट? सो आई पुट इट इन दिस ऑपरेटिंग कॉस्ट. So you have acquisition cost जो upfront cost है. Then we have operating costs which are nothing but recurring cost. ये बार बार every year, every month, ongoing cost है, right? So there is a energy cost which is ongoing. There is a training cost. May not be every month, but yes, definitely every 6 months or every year. Maintenance cost again may not be every month, but maybe every quarter or half yearly or annually, but definitely annually. And then there is a downtime or a breakdown kind of a cost की उसको repairs चाहिए. और maintenance is basically your preventive maintenance की, which is more on a proactive basis. Downtime is वो breakdown हो गया, अब उसको मेरे को ठीक करना ही पड़ेगा, मेरे को उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा. Maintenance is more of preventive maintenance, right? So that is the difference between maintenance and downtime. So the second bucket is basically your operating cost, जो recurring cost है, जो बार बार वो recur होगी, हर साल होगी, हर महीने होगी, हर 6 months में होगी, right? बार बार आएगी at a certain frequency. And then the third bucket is end of life cost. Again, this is a one time kind of a cost, right? आपको उसको डिस्पोजल करना है. सो देर आर सर्टन लॉज की इस हिसाब से डिस्पोजल ऑफ करना है. सो देर इज अ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ ऑल्सो. इफ यू आर इंस्टॉलिंग एन इक्विपमेंट और वो इक्विपमेंट की लाइफ खत्म हो गई है, लेट्स से 10 years हो गए हैं, एंड यू वांट टू सेट अप अ न्यू इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी हैज चेंज, then there is a cost of decommissioning that equipment also. So that is also a end of life cost. Then there are residual costs. Residual is nothing but आप let's say आपने equipment use किया and 10 साल बाद या 5 साल बाद you sell it for a certain value. You sell it for a certain value and you recover some costs, right? तो वो उसमें से एक्चुअली माइनस हो जाती है. सो द लास्ट टर्म इज द ओनली नेगेटिव टर्म इन दिस इज फ्रॉम अ समेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज द रेसिडुअल कॉस्ट दैट यू हैव टू नॉट ऐड बट रिड्यूस, क्योंकि वो पैसा आपको वापस रिकवर हो रहा है. अगर आप उस इक्विपमेंट को बेच देते हैं, सेल ऑफ कर देते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस बिकॉज यू इट इज लाइक अ यूज्ड आइटम, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. एंड देन रिसाइकलिंग, उसको रीयूज करते हैं. जो हम सर्कुलर सप्लाई चेन्स की बात कर रहे थे, तो वहां पे आप उसको रिसाइकल कर रहे हो, उसको रिफर्बिश कर रहे हो, उसको रीयूज कर रहे हो, तो उसको उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. एंड देन इट इज रेडी फॉर री एक्विजिशन एंड री ऑपरेट एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो ये essentially बहुत सारी टाइप की कॉस्ट है, बट वी कैन बकेट इट इनटू
three major cost components. Three major cost components. One is the acquisition cost, which is your upfront cost. कितना हम upfront pay कर रहे हैं. Apart from transportation, it is all capex model. कितना capital expenditure हम उस पे लगा रहे हैं upfront cost pay करके. Then there are operating costs. So acquisition costs are one time cost. Operating costs are recurring cost. कि बार बार उस पे cost आएगी. So energy, training, maintenance, downtime. I told you difference between maintenance and downtime. And then finally, end of life costs, disposal, residual, recycling, decommissioning. Right. So total cost of ownership is nothing but the sum total of these three: acquisition cost, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस एंड ऑफ लाइफ कॉस्ट. और उसमें अगर कुछ रेसिड्यूअल वैल्यू बचती है कि ये इक्विपमेंट को हमने वापस करना है, देन इट इज माइनस रेसिडुअल वैल्यू. जो हमें वापस रिकवर हो गया वो हम उसको माइनस करते हैं. एंड वी कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट टू अ प्रोडक्ट, सर्विस और अ सिस्टम ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल.